Hi friends, welcome on YourPedia and this video is related to material management position in Coal India Limited. अगर आप इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं, आपने इंजीनियरिंग किया है विद 60% मार्क्स एंड अगर आपके पास MBA भी है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आपको ये भरनी चाहिए बिकॉज सिलेबस बहुत ही सिंपल है, एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं होता एंड आप एक महारत्न कंपनी में बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. इन केस यू आर इंटरेस्टेड, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज आपको YourPedia का ये जो मॉड्यूल है कोल इंडिया लिमिटेड का, आपको ये लेना चाहिए और इसकी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए. आज का जो मेरा वीडियो है वो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल मैनेजर्स उससे रिलेटेड है. आप जानते हैं फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग मैनेजर्स पोजीशंस होती हैं. प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मटेरियल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सिमिलरली आपका सेल्स मैनेजर. ये मार्केटिंग और सेल्स तो आउटसाइड का काम हो गया. प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एंड आपका ये मार्केटिंग, आपका मटेरियल मैनेजर, ये बहुत ही क्लोज एक्टिविटीज़ हैं और इसमें ओवरलैपिंग भी होता है. तो मटेरियल मैनेजर का काम क्या है, इन्वेंट्री, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और टर्म्स क्या हैं उससे रिलेटेड, ये आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. मैंने जैसे आपको बताया कि वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स कोल इंडिया लिमिटेड में और इस साल का पहला ही अपॉर्चुनिटी आपका जो नोटिफिकेशन है वो ये जॉब से रिलेटेड है. ये उसका रिक्वायरमेंट है. इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 साल का MBA और 60% अगर आपके पास मार्क्स हैं, ये आपका पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2. डोंट यू वरी, सारे का सारा ये आपका YourPedia के पैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है. यू कैन प्रिपेयर विद अस. आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है पेपर में और अगर आप स्कोर करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द नेक्स्ट स्टेज. और एज 30 ईयर्स है. अगर आप इसमें फॉल करते हैं, आप इस क्राइटेरिया में हैं, आई एम श्योर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं. अब क्या है रोल्स ऑफ मटेरियल मैनेजर्स. सो मटेरियल मैनेजर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली फंक्शनरी होता है प्रोडक्शन लाइन के अंदर सारी, और जितने भी मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क हैं वो देखते हैं. तो मटेरियल मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. वन वे टू नो दैट इज लाइक व्हाट आर मटेरियल मैनेजमेंट एक्टिविटीज. व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट, व्हाट डू वी डू. So if we know what is material management activities, we know what is his roles and responsibilities also. So starting from planning, and strategic planning means long term planning. Strategic planning to procuring the material, I mean purchasing some material from outside, storing it, inventory, controlling it, monitoring it and distribution the material for production. So let's plan what we want to produce. Starting from the planning till we need to give something to the production. Like okay, now you start the production. That activities of the material manager. Once production starts, then the production manager will come into picture, and obviously when production is complete, then you have to supply it outside and all. So that is how it will go. But material manager does not stop only at the stage of जैसे मैंने बिल ऑफ मटेरियल बना दिया और मैंने मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल रिलीज कर दिया और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई. तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है वो भी आपका जो बाहर जाएगा, सप्लाई में जाएगा, तो कुछ इंफॉर्मेशन मटेरियल मैनेजर को वहां से भी होनी चाहिए. पैकेजिंग से रिलेटेड भी मटेरियल मैनेजर वर्क करता है. सो एनी हाउ विल सी हाउ दिस ऑल गोज. कंप्लीट मटेरियल फ्लो साइकिल, परचेज ऑफ द मटेरियल टू प्लानिंग टू कंट्रोल द वर्क इन द प्रोसेस till the finished product is there. So this all activities are actually taken care of the material manager. And organizations will basically depend upon effective these managers, material managers, to make sure that everything goes okay. The waste is minimum, inventory is managed properly, and everything goes okay. That activity is done by material managers. So what material managers will do, these are the activities. The purchase order, e-procurement. Purchase order means it can be done through e-procurement also. Like you are procuring something and you are purchasing it online, not offline but online. So purchasing order, material requirement planning, planning the production schedule, planning the capacity requirement. So all these activities are related to planning. So planning activities, material, how much is required, production,
capacity requirement, these all things are well planned. So the material manager only will be taking care of that. Then operation. After planning the things, then comes execution or operation of those things, right? And then procuring the things. Receiving and distribution is basically procurement, to procure the things, right? And then maintaining the data, report, analytics, and these all activities. And then maintaining the inventory and this sales and operation planning, production, inventory control, shipping and receiving, material storage, production planning and scheduling, maintaining the inventory levels, purchasing purchase department. In fact, procurement and purchase department is directly under the observation of material manager. So shipping and all, I mean, you have got the material or not, transportation, shipping, storage, purchase, all these things are the domains of material manager. So what are the activities? If we categorize now, ऊपर जो मैंने डिटेल में मेंशन किया, अब उसकी कैटेगरीज करते हैं. तो कैटेगरीज में प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, लाइक यू आर प्लानिंग, एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड. यू विल प्लान ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट. मार्केट में क्या चल रहा है उसको आप देखोगे एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल प्लान. यू कैन नॉट प्लान द प्रोडक्शन इफ यू आर नॉट नोइंग द ट्रेंड इन द मार्केट. फॉर दैट ऑब्वियसली फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट वगैरह होता है. तो ट्रेंड आपको पता लग गया, कस्टमर डिमांड पता लग गई, एंड प्रोडक्शन शेड्यूल आप डेवलप कर सकते हो. एक्यूरेट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान्स यू कैन मेक. सो नो डाउट मटेरियल मैनेजर्स मेक यूज ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक्स ऑल्सो, बिकॉज हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन करना है और कितना ऑर्डर प्लेस करना है, प्रोक्योर करना है, ये डिपेंड करेगा कितना आपका सेल हो सकती है, और वो फोरकास्टिंग से पता लगेगा. सप्लायर सिलेक्शन, वेंडर मैनेजमेंट इज ऑल द डोमेन ऑफ मटेरियल मैनेजर. इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री जो आप सेव करके रखते हो उसका कंट्रोल करना, प्रोक्योरमेंट करना, नेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सप्लायर, परचेजिंग द परचेज ऑर्डर. सो व्हाट इज परचेज ऑर्डर, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज वेंडर, व्हाट इज सप्लायर, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो. वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे चीज़ों को रखना है. वेयर हाउस जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखा जा सके, दैट यू नीड टू मेंटेन. कॉस्ट मैनेजमेंट, to reduce the material cost, how you can reduce the material cost further. Quality control, technology implementation, because in the organization you need to maintain your MRP, ERP. MRP is material requirement planning. So that is a integrated system. Enterprise resource planning is also integrated system, जहाँ पे आपने बहुत सी चीज़ों को इंटीग्रेट करके रखा होता है. MRP is like material requirement planning, how much material is required and all. So ERP, MRP का knowledge, and obviously he is leading the team of the people, तो टीम लीडरशिप का भी वो रोल प्ले करता है. तो कौन सी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स मटेरियल मैनेजर शुड हैव, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स मटेरियल मैनेजर शुड हैव. सो ही शुड बी नोइंग अबाउट ERP, MRP. द फर्स्ट थिंग somebody will ask him is, आपने कभी ERP पे काम किया है, जैसे SAP, Oracle, इनके ERP होते हैं, तो क्या आपने कभी ERP पे काम किया है, आपने MRP पे काम किया है. He should be knowing how to handle these softwares. Operational and financial metrics, because you have to make bill of material, you have to release the master production schedule. So आपको फाइनेंशियल टर्म्स का भी नॉलेज होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वेंडर्स के साथ, नेगोशिएट करते हैं आप, तो आपको उनका भी आइडिया होना चाहिए. इन्वेंट्री का नॉलेज, ABC एनालिसिस आप करते हो, इन्वेंट्री classification of the material in inventory as per their cost and quantity. So ABC analysis, master scheduling, supplier capabilities, key performance indicators, KPI, उनका नॉलेज होना चाहिए. रीऑर्डर कब आपने करना है, लीड टाइम एनालिसिस. सो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ क्या होता है, स्क्रैपिंग, साल्वेज. सो ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज शुड बी नोन टू द मटेरियल मैनेजर, then only he can do justice with his activities. Obviously personal level पे lot of communication goes, lot of collaboration is required.
फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट आपका इंपॉर्टेंस क्या है मटेरियल मैनेजमेंट का, वाई मटेरियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। सो इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन as it directly impacts what? It impacts the production efficiency. प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एक्चुअली इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। कॉस्ट कंट्रोल, सो इन्वेंट्री लेवल एंड if you want to optimize your inventory level, that means ना तो एक्स्ट्रा ना लेस, ना ज़्यादा हो ना कम हो, इन्वेंट्री के अंदर उतना सामान हो जितना रिक्वायर्ड है। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री सेव्स अ लॉट ऑफ रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ योर इन्वेंट्री लेवल इज ऑप्टिमम, इफ यू मैनेज इट ऑप्टिमम लेवल, then you can control the cost factor also, because if you are keeping more things than required or keeping less things than required, there is a cost component जो उससे associated है। Quality or customer satisfaction is always very very important, because business of the organization only goes if more customers are there, and customer का perception is related to customer satisfaction, and you need to bring quality, and quality comes with a lot of things, right? And material manager is certainly going to contribute to that. Competitive edge मिलता है efficient supply chain management से and cost effective operation से। Role of material manager is actually very crucial for the success of any organization, that you can easily conclude. Now when you effectively handle the flow of material, then material manager can contribute in cost reduction, operational efficiency and customer satisfaction, all these things, because eventually if cost is less, तो cost of the product, जैसे हम बोलते हैं value for your money, so cost of the product if it is less and features are more, तो customer will be satisfied, and cost will be less if inventory cost is controlled, production cost is controlled, and material manager plays very important role in that. तो क्या फंक्शन है मटेरियल मैनेजमेंट के? प्रोक्योरमेंट, टू एक्वायर द रॉ मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द सप्लायर्स। सो बेस्ट कॉस्ट में आप मटेरियल लो, एंड योर रिलेशनशिप विद द सप्लायर शुड बी गुड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट is very very important for cost control, because inventory if it is there, it will meet the production schedule, or it involves tracking of the inventory levels, stock replenishment, so all these things are very much related to this. Logistics and transportation, logistic and transportation from supplier to warehouse, warehouse to production facility, and production facility again to warehouse। तो रॉ मटेरियल का और फिनिश प्रोडक्ट का लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग इज अनदर, स्पेस यूटिलाइजेशन, प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन, डैमेज ना हो, so that your material does not get damaged and all, so those things are also to be taken care of. Quality control, quality standard is very very important. Quality control means you should see कोई damaged material is not supplied to the customer. So जब आपने प्रोडक्शन कर लिया, आपने फिनिश प्रोडक्ट बना लिया, then there should not be any damage to the product, so that ensures that no defected piece goes to the customer. If defected piece goes to the customer, obviously customer satisfaction will not be there, so you need to take care of that. Material handling, movement, protection, storage, control of material throughout the supply chain, that is basically the material handling. So technology, how technology helps in material management? Nowadays we talk about ERP, MRP. So integration of technology in the material management is actually making this entire thing very very efficient and reliable. Material management becomes very efficient and reliable if you make use of the technology in that, like enterprise resource planning system, warehouse management system, automated guided vehicles. आप मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग ना करके मेक इट ऑटोमेटिक. सो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल आर ट्रांसपोर्टेशन vehicle within the industry. Enterprise resource planning is entire integrated information system. I mean, one department to another department, the information system is truly integrated.
Warehouse management system. Warehouse is where you keep all the things. Think of companies like Amazon. Amazon जो इतनी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनीज है, वो अपने वेयर हाउस को बहुत अच्छे तरीके से उनको मैनेज करना पड़ता है, और अगर वेयर हाउस मैनेजमेंट इज इफेक्टिव देन लॉट ऑफ मनी गेट्स सेव्ड. इवन बाय स्मॉल डिसीजन taken with the help of technology, you can save lot of money for these companies. So human error gets reduced and real time data you get for better decision making. Nowadays you see these companies are so much behind, getting real time data. तो real time data क्यों companies चाहती हैं? Because they want to take right decision, they want to make right decision. ERP integrates various functions of material management and provides unified platform for procurement, inventory management and logistics. So different departments and coordination and communication among those departments is something which is done properly. So what is the impact of effective material management? If the material management is effective, then cost gets reduced, minimize the cost associated with procurement, storage and transportation. So that is the most important thing. Effective material management, or the effective role of the material manager will help to reduce the cost जो procurement की है, storage की है, transportation की है. तो material manager इन 3 cost के साथ deal करता है. Storage means inventory, procurement means from where to take, vendor, supplier and all, transportation means logistic and warehouse management, right? So lot of money can be saved in this. Production efficiency, if right material is available at the right time, then production cost will be less because interruptions नहीं आएंगी, productivity will be better and it can lead to the profit to the company. Customer satisfaction, obviously if defect free product is delivered to the customer, a lot of customer satisfaction will come. Sustainability, that simply means reduce the waste and optimize the resource. So material management is very, very helpful in sustainability of this entire thing. Companies can minimize environmental footprint if they are managing the material very effectively, because आजकल जो बड़ी बड़ी companies हैं, मैं I give you small example. Amazon, whenever it is to deliver something to you, or for that matter any e-commerce company, अगर आपको कुछ deliver कर रहे हैं तो पेपर का यूज करते हैं, उसमें पैकिंग के लिए पेपर इज यूज्ड, एंड पेपर कम्स फ्रॉम द वुड and wood are cut and there is a carbon footprinting because wood are carbon sink. तो अगर आप कार्बन एक पैकिंग के लिए अगर आप इतने वुड कट कर रहे हैं तो उससे ये पता लग जाता है कितना कार्बन आप कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं. सो अमेजॉन कितना कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस कर रही है. सो एट द एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट फॉर आवर एक्टिविटीज दिस इज द कार्बन फुटप्रिंटिंग विच वी आर यूजिंग एंड दिस इज हाउ मच वी आर सेविंग. तो मटेरियल इफ प्रॉपरली इज यूज्ड, लेट्स से the kind of paper you are using, material manager अगर effectively काम कर रहा है and he is choosing the right material for packing, जिससे आपका carbon footprint reduce हो रहा है, कम हो रहा है, you understand what transformational step that will be. Because when you have to do the business, transnational, national business, international business, आप एक country से दूसरी country में कुछ चीज़ें भेज रहे हैं, then these things are very, very important. Sustainability is very, very important. And nowadays we talk a lot about sustainability. Now what are the challenges which material managers face? Lot of challenges are faced by material managers. एक तो supply chain disruption सबसे बड़ा challenge है. कोविड के टाइम पे भी what we have seen, कोविड के टाइम पे we have seen supply chain disruption. So during the COVID time इंडिया ने बोला आत्मनिर्भर भारत, make in India, आत्मनिर्भर भारत, self reliant India, because we cannot depend upon फॉरेन कंट्रीज इवन फॉर परचेज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. मास्क के लिए भी अगर हम चाइना की तरफ देख रहे हैं और वायरस चाइना से ही आया है, वायरस हैज कम फ्रॉम चाइना एंड एंटायर इंटरनेशनल दिस ट्रेड मार्केट वो डिसरप्ट हो गया सारे का सारा सप्लाई चेन. तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अगर हो जाए, जैसे कोविड हुआ, तो आपकी सारी की सारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है. सप्लायर इश्यूज आते हैं, सप्लायर आपको जो दे रहा है उसको को ट्रबल आ गया, वो देना बंद कर दिया उसने. ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस आ गए, लॉजिस्टिक्स, कहीं स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, सो द रोड इज ब्लॉक्ड एंड जो आपको सप्लाई मिलनी थी वो आपको नहीं मिली. सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज कम. इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस, डिमांड फ्लक्चुएशन. सो कस्टमर की डिमांड सडनली आ सकती है, समटाइम द डिमांड विल बी वेरी हाई, समटाइम डिमांड इज वेरी लेस. सो सडन चेंज इन और अनप्रेडिक्टेबल चेंज और सडन चेंज इन द डिमांड ऑफ द कस्टमर
can lead to fluctuation, you know, inventory management challenges can be there. So inventory accuracy, how much we are to maintain, and inventory में जो सामान रखा है वो safe है, storage space constraints, warehouse space where we are keeping, those kind of issues, handling cost, data entry, theft, you know, accurate maintaining of the records. So inventory management itself, warehouse management का एक part है inventory management. Inventory management is itself is a very very challenging task. So there are so many things which are related to inventory, like demand of things and you know, supply of things, inventory accuracies. So all these things are to be properly taken care of. Cost pressure, so rising material cost, so material cost is increasing, and competitiveness, you know, competitive pricing is there. So you need to maintain, you know, competitive in the market. So material managers are to negotiate the prices if you want to be competitive. You are always to negotiate with your vendors and suppliers if you want to become and if you want to remain competitive in the market, because whatever products you are making, you need to be very very competitive in that. Cost of quality, like defected material अगर आप दोगे तो obviously supply chain में उसका cost बढ़ जाएगा, because now there is a reverse logistics also, cost in reverse logistics. Material cost, फिर vendors से negotiation, फिर you know, defected material, again return that to you know, again the customer will return that to you. So all these things are related to cost kind of challenges. Technology challenges are, you know, ERP system, transportation system and real time data को integrate करना, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, IoT, AI, deep learning, big data, no, so many things are coming. So जो आपके ट्रेडिशनल आपने सिस्टम बनाया होता है, nowadays technology is changing at very fast pace. जो भी तुमने ट्रेडिशनल सिस्टम बनाए हैं अपने, the way you work earlier, now sometime you have to acquire new technology and the people should get trained in that. साइबर सिक्योरिटी रिस्क अलग है, जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो अलग हैं, आपका सिस्टम हैक कर लिया जाता है. सो दोज काइंड ऑफ इश्यूज आर अदर इश्यूज. सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंसिडरेशंस आर देयर. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मैंने आपसे बताया कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा एक इशू है इसमें. लाइक इफ यू आर अ कंपनी वेयर पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग एंड ऑल, so then environmental issue comes, carbon footprinting issue comes, और आज every country is trying to reach net zero. So net zero attain करने के लिए obviously you have to consider this. Ethical sourcing, material are you know handled in such a way that everything becomes ethical. The labor practices you are using, environmental implications you are taking care of, so everything should go ethically correct, right? So the labor which is working for you, आजकल डिस्कशन चल रहा है कितने घंटे काम करना है, 48 घंटे करना है या आपको कितने घंटे करना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग, सो दोज इश्यूज आर आल्सो देयर. एंड कंप्लायंस, बेसिकली आपको स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है. टैलेंट मैनेजमेंट, स्किल शॉर्टेज भी होती है, तो रिटेनिंग द स्किल्ड प्रोफेशनल्स और उनको ट्रेन करना, दैट अगेन इज अ चैलेंज. एंड कंटिन्यूअस लर्निंग इज अ चैलेंज. सो मटेरियल मैनेजर के सामने ये चैलेंज हैं, गेटिंग द राइट पर्सन एंड ट्रेनिंग देम एंड कीपिंग देम, रिटेनिंग देम. एथिकल इश्यूज, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, टेक्नोलॉजीज एडॉप्शन इश्यूज, कॉस्ट, प्राइस प्रेशर, मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, all these issues are the issues which material manager is facing. So कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स कितने टाइप के होते हैं? As I told you in the beginning, other than material manager there are other managers also. Material manager actually focus on efficient flow of the material, whether it is a raw material or finished product. So he deals with material flows, procurement and sourcing of material, inventory management, supplier relationship and negotiation, logistics and warehousing, cost management. These are the activities of material manager. Production manager is actually taking care of production. Sometime when production manager is not there, material manager only takes care of that, but his work is to production, scheduling, planning, production efficiency, overseeing the production operation, only related to production. Then comes plant manager.
So he takes care of entire plant, and plant is manufacturing plant or facility. So he will make decision, strategic planning, safety of the people working, quality of the production, plant sources, what are the resources, manpower resource, material resource, so budget. So all these plant managers will take care of. Project manager will basically be dealing with one particular project. What is the cost of the project, budget of the project, timeline of the project, that everything project manager will take care of. He will define the project goals, objectives, project plans, schedulings, managing project resources, monitoring project progress. So those everything project manager will take care of. Now this is the image which I have provided you, friends. You can material manager, production manager, plant manager, project manager. So how this all is different, like he's focusing on material flow, production, plant, taking care of the plant, taking care of the project. So he will be talking about supply chain, procurement, inventory. He will be talking about production, overall plant, specific project. So this is somehow some difference between these, but you need to collaborate. All these managers need to collaborate with each other. So production manager is to work with material manager and vice versa. So all these managing activities are to be collaborated. Maximum comparison is done with production manager and material manager. This comparison is very frequently done. Both roles are very crucial for production environment. Entire production process is taken care of production engineer. So these are the main responsibilities of production engineer: planning, execution, improvement, team management. And material manager is dealing with material, actually procurement, inventory, logistic, cost control, quality control. So this is basically material manager. So these all activities are accordingly done. Now friends, these are the questions at the end जो मैंने आपको इसके लास्ट में दिए हैं. So if you go through this lecture properly, the questions you can handle very effectively, which is not the responsibility of material manager. So production scheduling is the activity of production manager. So some differences will come. Supplier selection, vendor selection, negotiation, that is material manager, and inventory control, material manager, procurement, material manager. Inventory management is done to minimize the holding cost, that we have discussed earlier also. So what are the challenges faced by material managers in today's economy? So supply chain disruption is the main challenge which material managers are facing nowadays. Just imagine that during the time of COVID, what must have happened. So entire supply chain disruption must have happened during that time. So these kind of challenges are there. And material manager ensures the product quality. So his main role is to ensure the quality of incoming material, actually. So material manager will play a very crucial role in selecting the supplier and vendor in such a way that quality is taken care of. So what technologies are used? ERP, customer relation management, data analytics, all these technologies are used. So friends, please go through these questions which I have added at the end of this, so that the questions are from this theory only. जो हमने किया उसी में से questions हैं, इनको revise कर लेना. So material management का जो entire syllabus है, that is very well defined syllabus, difficult नहीं है. और if you are targeting for this exam, I am very sure if you go through these all videos और lectures of half an hour 45 minutes, जितने भी lectures पढ़े हुए हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छा कर पाओगे आप इस एग्जाम में. And the number of seats which advertised by Coal India Limited are really good. So prepare well so that you are in position to convert this into final selection. All the very best. Thank you.